towards native Android development. Oh, okay, trying to. Okay, cool, Yash. आपको फिर लास्ट एंड्रॉइड जब चल रहा था तब तब शायद ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको, बिकॉज उसमें शायद डेवलपमेंट सिखाया था पूरा एंड्रॉइड विद कॉटलिन, राइट तेजस? या हाफ हो गया था. We have 43 participants right now. We'll wait for 5 minutes, and then as soon as the clock hits 10, 7:15, we'll start. Okay, and before we begin, let me just brief you about what we are gonna do today, who is the speaker, and what will be the flow of the session. So, guys, we'll wait for a few more minutes, and then we are good to go, right? Just put in the chat box who all have done the setup and are ready to to keep rolling. Yeah. My setup is ready. I'll drop a link. Yeah. Okay. Nice one, Hitansh. हाँ, हम भी क्राउड मैनेजमेंट सीख रहे हैं. Okay. अरे बस ऐसा क्या 5 लोग ही रेडी है, 50 लोग हैं यार, ऐसा करोगे? फटाफट खोलो भैया इसको. एनर्जी कहाँ है? लाइक मैं मीम बना के भेजूं क्या? एनर्जी कहाँ है? इतना तुम लोग यार, तुमको तो चैट में डालने बोल रहे कि इंट्रोवर्ट भी चैट में डाल सकता है मैसेज. क्या यार तुम लोग. रेडी? ओके, देख लो यार, ऋषभ इंट्रोवर्ट है, फिर भी इतना बोल रहा है. कम ऑन गाइस. हाँ, लाइक तुम तो थोड़ा मेहनत कर सकते हो यार. इलेक्ट्रॉन के पास या तो उसके पास चार्ज है ब्रो, एनर्जी नहीं है. ओके सुधांशु, नाइस वन. लाइक मैं पिन कर देता हूँ इसको एकदम, मतलब पिन करके रखता हूँ. लेकिन हाँ, कंटेक्स्ट नहीं पता रहेगा लोगों को. अच्छा, निर्मित, इफ यू कुड चेक कि तुम्हारे कॉलेज से लोगों को आने ज्वाइन करने में कुछ इश्यूज नहीं हो रहे हैं ना? I don't think they're facing any issues. If they would have texted me already. Yeah, I've dropped the links on all the important groups, so as they'll feel comfortable, they'll join. Oh, okay, great. Okay. लोग आईपीएल तो देखने नहीं चले गए? I guess so. या आज किसका मैच है वैसे? आज DC versus MI है ना? इसके लिए कम लोग आए. MI fans है bro. MI fans in the house. MI fans कितने यहाँ पे? यार ये तो MI supporters. हाँ, लाइक एकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं था यार. इस पे भी शांत. Okay. Great. Obviously, all of the people sitting over here will be MI fans. तो क्या ही सवाल है? नहीं इम्पोस्टर्स हो सकते हैं अपने साथ. Any CSK fans? पूछ रहा था बस. हाँ? Okay, I think Swayam is a CSK fan. Yeah. Okay, guys. We'll start, guys. We'll start in a minute, and we won't be waiting for long because I think we have enough participants to begin.
Before we begin, guys, this is our first collaboration for Flutter Festival with Walchand College of Engineering, Sangli. We have Nirmit with us as a speaker, and he would be he would take you with the concept of Firebase and authentication. We would in today's session we would be designing and implementing a sign up page, login page, and a home page, and we would see that how you can connect your UI and with the database, and then how you can authenticate whether the user who has logged in using his credentials uh, yeah logged in using his credential, and we would see if the information which he provides is right or wrong, and we'll compare it with the information that we have that we already have in our database. So are we clear till here, guys? So that we can begin the session and with Nirmit. Okay, so just let me know if we are good to go, right? So we have 44 participants. I want 44 people. As you know from the last session as well, that what I have told is the duration of the session depends on the participation of the from your participations, right? So just put in the chat box. Are we cool? Just are we good to go with these things, right? I think it is clear as of now what we are going to do in this session. Just put yes or no in the chat box. What is the problem? Guys, फटाफट. वो खुद का yes no start करेंगे. Thank you so much. Yes, Eve says yes, Samir says yes. Thank you, Samir. And बाकी लोग okay, Pratik says yes. Okay. Thank you so much, Dev. Guys, अगर आपके फ्रेंड्स आना चाहते हैं तो उनको लिंक भेज दो मीटिंग का, बिकॉज आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और इसके बाद लाइक जो फर्दर सेक्शन के डिटेल्स हम लोग दे देंगे, लाइक और इसमें बाकी की चीजें आज वाइंड अप करेंगे. ठीक है. ओके, वी हैव सुधांशु सेज यस. ओके सुधांशु, थैंक यू. ओके, सो okay, yeah, so are we good to go? yeah, we are good. I think we are good to go. Okay, okay. Nirmit, you can start the session. Okay, Yeah, let's start. Thank you, Rishabh. Okay, hi everyone. Welcome to the following session on Firebase and authentication. Yes. Yeah. Just a moment. Yeah. Okay. I have start recording. Yeah. Okay, You can go. Okay, let's start again. Hi everyone, my name is Nirmit and welcome to this following session on Firebase and authentication. Right, so welcome everyone. I'm hoping that today we'll all learn something together. मुझे भी कुछ सीखने का मिलेगा, आपको भी कुछ सीखने का मिलेगा, और हम मिलकर कुछ आज सीखेंगे, and we'll definitely put some great efforts together. So before we start, it's very important that we discuss about the topics that we're going to cover in today's session. First of all, we are going to get familiar with Firebase. Now you all will be familiar that Firebase is a powerful tool that helps you manage your app's backend features, and it offers you many features, right? We'll also be designing a basic UI layout. So we'll be making use of some basic widgets that I'm sure you would have learned in your previous sessions, and we'll be designing a login, sign in, and a homepage as Rishabh introduced you at the starting of the session. Then definitely what we are all here for is authentication. Well, there are a lot of authentication features that we can use using Firebase, but today's we're going to take up a simple one, and we're going to do it using email and password authentication in Firebase with the help of Flutter. I hope you all are excited, and if you all are excited, I would definitely love to see yes in the chat box, right? So let us show some enthusiasm and see whether the crowd is actually enthusiastic to learn something today or not. Yeah. So I can see a lot of yeses in the chat box, and I'm actually very sure that the session is actually going to go very good. Okay, so yeah, that's a lot of yeses in the chat box. So let's move on forward. So before moving on forward, it's important that I introduce myself. So hello everyone once again. My name is Nirmit. I am actually studying in Walchand College of Engineering, Sangli, and right now I'm working as a management executive at GDSE WCE. So I have been coding in Flutter for the past 3 to 4 months, and it has been an incredible journey for me. I have made some small projects on Flutter, and I've kind of started to enjoy development, which was certainly the motive of establishing a GDSE club at our campus. And I guess that's why you all are here, because you all also love development, and we're definitely going to do something together, something nice together, as I should say. Moving on forward, let's play a small game. Can anybody guess the logo
which is being reflected on the screen right now. Let's see how many people will be able to guess it. If anybody guesses it right, I'm going to give him a chocolate. Okay, well, 2 people guessed it at the right time, so no chocolates for you. Okay, Firebase. Yeah, I guess everybody pretty much knows that this logo belongs to Firebase. मतलब सब अपना homework ढंग से करके आए हैं. Okay, great. And how many of you knows what exactly is Firebase? Just Yeah, put in that's the also chat. great Yeah, लोगो देख लिया है, अब आगे भी तो लोगो पता तो रहना अब तो चाहिए बताओ ना. ना क्या होता है Firebase. हाँ, like चलो गाइस फटाफट. यस पता है तो यस डालो, नहीं पता नो डालो, थोड़ा बहुत पता नो एसक्यूएल Okay, डेटाबेस. no SQL database. That is partially right. Yes, it is. क्लाउड स्टोरेज पार्शियली राइट है. Okay, right. नो It ठीक है. provides hosting database, backend, front-end integration. Yes, Prateek is almost right. Yeah. Real-time database. Yes. Yes. सब आधे एक-एक पॉइंट्स ऐसा Exactly. मतलब. वही मैं ऋषभ ऑब्जर्व कर रहा हूँ. So आधे वो points. सबको कंबाइन करके हम बताएंगे कि क्या होएगा. Exactly. Nice So, one guys. Nice one, guys. So, ठीक है. Let's move on forward and let's unroll or unravel what are the mysteries about it. So let's Firebase. Let's try to understand what Firebase is. तो पहले बुक जैसा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी में भी ढंग से एक्सप्लेन करेंगे कि what is Firebase. Firebase is a powerful platform for your mobile and web applications, and Firebase can power your app's backend, including data storage, user authentication, static hosting, and much more. With Firebase, you can easily build mobile and web applications that can scale from 1 user to 1 million. चलो बुकेश लैंग्वेज तो बहुत बात होगी, जरा सीधी बात करते हैं. You can consider Firebase as a service that is offered you by Google that helps to power your app's backend, and it offers you many features that you can use, such as data storage, such as user authentication that we're going to talk about today, static hosting, analytics related to your app, ML kits, and a lot more. Right? So I'm definitely getting that you are kind of getting what Firebase is. So we'll move on to next slide and we'll definitely try to understand Firebase in detail. अगर एक वर्ड में समराइज करना तो Firebase एक सर्विस है जो आपके ऐप का बैकएंड डिजाइन करने में आपको हेल्प करती है, और Firebase आपको बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करती है जो आप यूज कर सकते हो. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, आई सर्टेनली बिलीव इट्स important to look in the past. It's important to look about the history of how a certain product was created. So let's read the story that has been mentioned in the following slide. In 2011, before Firebase was actually established, एक स्टार्टअप होता था जिसका नाम होता है Envolve. तो Envolve जो थे उन्होंने क्या किया, they started with a simple product for developers that they actually made an API that enabled the integrity of online chat functionality to into their website. तो बेसिकली सिंपल मत बोलूँ तो लेट्स से आप कुछ कस्टमर केयर वेबसाइट बना रहे हो, जहाँ कस्टमर को आपसे बात करनी है तो आप इनका API यूज कर सकते हो टू एनेबल द ऑनलाइन चैट फंक्शनैलिटी. अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये थी कि जो लोग थे या जो डेवलपर्स थे जो इस ऑनलाइन API को यूज कर रहे थे, दे वर नॉट जस्ट यूजिंग इट फॉर चैट एप्लीकेशंस, बट रादर दे वर यूजिंग इट फॉर मच मोर अदर पर्पसेस. फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे डेवलपर्स थे जो अपनी गेम के स्टेट को मेंटेन करने के लिए रियल टाइम में अपने यूजर्स के लिए रियल टाइम में गेम को मेंटेन करने के लिए उनके फीचर को यूज कर रहे हैं. अगर मुझे बेसिकली समझाना हो तो अगर आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो तो उनको रियल टाइम में ही वो मैसेज रिसीव हो रहा है. तो फॉर एग्जांपल मैं कोई गेम खेल रहा हूँ और एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द गेम मेरे को 100 लॉक चाहिए, तो उनको एक ही स्टेट में रखना है, तो मैं वो चीज़ कर पा रहा था इस API के थ्रू. तो उनको अपने प्रोडक्ट का पोटेंशियल रियलाइज हुआ, एंड लेट्स रीड आउट की फर्दर क्या हुआ. आफ्टर देर अंडरस्टूड कि उनका पोटेंशियल बहुत है इस चीज़ में और जिस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है, उनको समझ आया कि एप्लीकेशन और एप्लीकेशन डेवलपमेंट आगे जाके बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है. सो उनके जो फाउंडर्स थे जेम्स टैम्पलिन एंड एंड्रयू ली, उन्होंने डिसाइड किया कि चैट सिस्टम को रियल टाइम आर्किटेक्चर को थोड़ा अलग से रखते हैं, और अप्रैल 2012 में उन्होंने फायरबेस क्रिएट किया जो एक सेपरेट कंपनी थी जो बैकएंड एज अ सर्विस विद रियल टाइम फंक्शनैलिटी ऑफर कर रही थी. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. आफ्टर दैट 2014 में फायरबेस को गूगल ने एक्वायर किया, एंड इट डेफिनेटली बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द मार्केट. एंड डेफिनेटली it's a multi-functional behemoth, it's a multi-functional creature, right, that helps you power your mobile and web platform backend के application के backend को power करने में मदद करता है, and we are still using it today. So we definitely understand the power of Firebase using this certain brief history about Firebase.
right? So definitely now you guys would have got an idea of Firebase. अगर मेरे को एक लाइन में समराइज करना तो Firebase एक टाइप की सर्विस है जो गूगल आपको ऑफर करती है, जो आपके ऐप के बैकएंड में पावर करता है. हमने ये भी देखा कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ और आज कितने लोग इसको यूज करते हैं. बट लेट्स सपोज आप एक एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो और आपके पास एक टीम है, तो आपको Firebase ऐसी क्या चीजें ऑफर कर सकती है जो आपको क्राउड से अलग हटके शो करेगी. So there are three things. You can actually build better applications, you can actually improve your app quality, and you can actually grow your business. अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो अगर आप देखोगे आप अपने okay, now look at this picture very carefully. You can actually you can build your better app using some features that Firebase offers. For example, authentication, ML kit, real-time database, cloud firestore. सो व्हेन हमने लोगों से पूछा कि Firebase क्या होता है, तो लोग हमें रियल टाइम डेटाबेस बता रहे हैं, क्लाउड स्टोरेज बता रहे हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस बता रहे हैं. ये सब के सब फीचर्स है Firebase के. यू कैन से इट इज अ डेटाबेस, बट एक्चुअली वो उससे भी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज आपको ऑफर करता है, राइट? सो यू कैन एक्चुअली बिल्ड योर बेटर एप्स यूजिंग द फंक्शनैलिटीज दैट दे ऑफर यू, जैसे ऑथेंटिकेशन, ML किट, जो हमने अभी बात करी. नाउ द सेकेंड फैक्टर इज आप अपने ऐप की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो. इस चीज का समाधान या इस चीज का सोल्यूशन भी हमें फ्लटर ने Firebase ने दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल दे हैव फीचर्स लाइक क्रैश एनालिटिक्स. अगर आपका ऐप जब आपने डिप्लॉय कर रखा है वो क्रैश हो जाए या उसमें कुछ ऐसे फीचर्स आ जाए जो आप नहीं चाहते हो, तो इस चीज के भी एनालिसिस की रिपोर्ट आपको Firebase ऑफर करता है. अदर देन दैट दे ऑफर यू विद टेस्ट लैब्स. आज आप अपने ऐप को टेस्ट करोगे एक मोबाइल फोन के लिए, बट यूजिंग GCP आप वही चीज 100 या 200 या 10 या 12 मोबाइल्स के लिए भी एक साथ टेस्ट कर सकते हो. एंड दैट इज द पावर ऑफ Firebase that it offers to you. Now we did talk about that we can build better applications using Firebase. We did talk about that we can actually improve the app quality. And the last part is now definitely जब हमारा app deploy हो गया, we want to increase the user base. And for that we need to grow our app. तो ऐसे फीचर्स भी हमें Firebase सपोर्ट करते हैं कि हम अपने एप्लीकेशन को ग्रो कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे ऑफर अस एनालिटिक्स, दे ऑफर अस प्रिडिक्शंस. सो दीज प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन आपके ऐप के डेटा और उस पर ML लगाई जाती है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, एंड आप उस चीज़ को समझते हो. यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि उस जो आपका डेटा है उसके साथ क्या करना है, और कुछ प्रिडिक्शंस बनाए जा सकते हैं जिनको आप अपने एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. सो एक्चुअली Firebase lets you do a lot of things, right? So let's move on forward. Now इधर मैंने बस एक सिंपल स्लाइड बनाई है जहाँ आई एम एक्चुअली एक्सप्लेनिंग दैट जो डिफरेंट पार्ट्स है Firebase के वो कैसे मदद कर सकते हैं. ऑथेंटिकेशन है, फायरस्टोर है, वी कैन टॉक अबाउट इट, वी कैन रीड इट लेटर ऑन. बट आई गेस आपको आइडिया आ चुका है कि Firebase कितनी पावरफुल चीज़ है एंड एक्चुअल में Firebase क्या है. सिमिलरली हम ऐप की क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 फीचर्स और डिस्कस कर रखे. एंड इन द सिमिलर मैनर हम अपने ऐप को कैसे ग्रो कर सकते हैं उनके बारे में भी मैंने यहाँ डिस्कशन कर रखा है. एंड आफ्टर दिस सेशन यू विल गेट दी PPTs. आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हो कि ये सब जो फीचर्स Firebase हमें ऑफर करता है इनमें डिटेल में क्या चीज़ें हैं और हम उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं. और यू कैन जस्ट गूगल अप और यू कैन चेक आउट द Firebase डॉक्यूमेंटेशन जो Firebase की ऑफिशियल साइट पर प्रेजेंट होगा, और आप उस चीज को जाके चेक कर सकते हो. सो इफ Firebase is clear to you, drop a yes in the chat box and let me know if you have any doubts before we move on forward. Oh, and guys, do you still believe कि सिर्फ डेटाबेस है Firebase, या अभी आपको क्लियर हुआ कि वो सिर्फ there are a database lot नहीं of है? things, exactly. Yeah, there are a lot of things involved, right? Sorry Sunil, we can't unmute participants. If you have any question you can put it in the chat box. Okay, yeah, matlab, yeah, sure. It is clear. Steve says it's clear. Yeah, Sameer says it's clear. clear. Okay, that's absolutely beautiful. So I think yes, we are good to go, and many people are interactive with us. I know people are actually very excited. यार क्या कर रहा है, इतना समझा क्यों रहा है, जल्दी ऐप खोलना, implementation शुरू कर yeah, सके. exactly. But I certainly believe it's very important to give you the base about things and not just jump on things directly, right? I have a doubt about Firebase. Yes, Sunil, you can drop it in the chat Just box. put it in and the we'll chat all will box try or to answer Q&A. this. Yeah.
इन द मीनवाइल किसी और को कुछ डाउट है या कुछ और चीज़ है, सो वी कैन डेफिनेटली डू दिस एंड yeah, I think we are good to go. We have okay. So let's do one thing. Let's go on forward. Rishabh, what do you say? Should we? Yeah, we are good to go. Okay. ठीक है भाई, बहुत बात कर ली फायरबेस की, समझ गए ये होता है वो होता है, फायरबेस दिखाते भी. सो लेट्स डू वन सिंपल थिंग. लेट्स गो टू firebase.google.com एंड हम अपना एप्लीकेशन भी ज़रा वहाँ पे सेटअप करते हैं, देखते हैं कि फायरबेस होता क्या. सो लेट मी शेयर दिस टैब. So this is the official website of Firebase. You can do one thing. I'm dropping a link in the chat box. You can go to this website. Basically Firebase ही है, तो आप जाके check कर सकते हो. And in the meanwhile, you guys can, sign in, right? So that we can move on further in our session. जब तक आप sign in करते हो, एक काम करते हैं, थोड़ा website को visit करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि official लोगों ने क्या चीज़ mention करी है. So definitely सामने का पेज में लिखा है Firebase helps you build and run successful applications. It is a backend by Google and loved by app development teams, whether it is startups or global enterprises, right? They offer you products and solutions you can rely on throughout your app's journey. You can build your app, you can release and monitor them. You can actually engage with your audience using the features that Firebase offers you, isn't it? Coming back, let's have a look at what are the different kinds of services or products that Firebase offers us. So one of the things that I can certainly see is that देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, right? We have Cloud Firestore, we have machine learning, we have cloud functions, we have authentication that we're going to talk about, we have hosting, we have cloud storage, there is real-time database. Just have a look at कितनी सारे features है जो Firebase आपको offer करते हैं, and that's what makes Firebase Firebase. That's what makes Google, right? It's basically making your life convenient by introducing Firebase, right? Just see the amount of, the things that they're actually doing things. Sunil says that, sir, in Android Studio, I am getting error at the time when I connect my project to Firebase. So definitely, we'll see to it. Sometimes you don't update your PubSec YML file, or you're not using the correct version of your dependencies that you're importing, Sunil. And that might cause an issue, that might have an issue, or you're actually not updating your JSON file properly. We'll talk about all of this when we move on forward. So not without wasting of word, we have seen that the website as well, right? We've seen the website as well, right? So एक काम करते हैं, in the meanwhile सबने sign in भी कर लिया हो गया. We are sorry, but you do not have access to Google developers. Please contact the organizer. The error is coming. Okay, you don't need to just access your GDSC. आप अपने normal private account से भी उस चीज़ को access कर सकते हो. I think they are trying to access this using the Gmail ID provided by the college. So Okay. she just use your personal You can use email your personal ID. instead. I have also used my Yeah. personal ID too. Yeah, मुझे instead कोई of scene using नहीं the है. one. Yeah, you college. can use your personal ID. Yeah. Fine. Okay. So हमारा जो भी काम रहेगा वो हम कंसोल पे करेंगे. So let's visit the console, right? So this is the Firebase console. यहाँ पे आप अपनी चीज़ें और अपने एप्लीकेशंस बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, एंड हम भी अपने थोड़ी ही देर में उस चीज़ को डिज़ाइन करने वाले हैं. बट बिफोर वी राइट जंप इनटू Firebase और हम प्रोजेक्ट कैसे इंटीग्रेट करते हैं, let's get back to our slides one more time. Is my slide visible? Yes, it is. So let's UI. Let's do a very simple activity now. Let's revise the UI widgets that we do. So what I'm gonna do, I'm gonna take you here. Right, let me just do this. So let me delete it. हम ना एक बहुत ही simple application design करने वाले हैं. Okay, we're gonna design a very simple application. That our application is going to have a sign up page, right? We're gonna have a sign up page, right? Simple है. And we're gonna have email, we're gonna have a password, and when we click on sign up, right? So यहाँ पे हम जो भी data enter करेंगे, right? Whatever data we write in our these fields, they will actually get stored to Firebase. जैसे हम उसको establish करेंगे, right? Simple है.
एंड जब वो फायर पेज चला जाएगा एंड वी एंटर डिटेल्स, वी विल आल्सो नेविगेट टू समथिंग कॉल्ड एज अ होम पेज. Simple. We're actually getting the idea what we're actually going to do. So we're going to create a sign up page. उसमें ईमेल का ऑप्शन होगा, उसमें पासवर्ड का ऑप्शन होगा, हम दोनों को लिखेंगे, हम साइन अप का बटन दबाएंगे, वो चीज़ें फायरबेस में जाएगी, वहाँ स्टोर होगी, और जब ये चीज़ होगी तो हम होम पेज पे लोकेट होंगे. It is one of the activities that we are planning to do today, right? Okay. Now, second thing that we're going to have, we're also going to have a login page, right? अब साइन अप किया है तो लॉगिन पेज भी ज़रूरी है. तो हम बड़ा सिंपल चीज़ करेंगे. वी गोना हैव एन ईमेल, वी आर गोना हैव अ पासवर्ड, वी आर गोना हैव वन बटन कॉल्ड एज लॉगिन, राइट? नाउ जो भी डेटा हम साइन अप करते वक्त फायरबेस में स्टोर करेंगे, राइट, वो डेटा वॉट एवर वी राइट, दैट डेटा विल बी चेक्ड, राइट? एंड इफ दैट इज राइट, वी विल नेविगेट टू होम पेज, राइट? अदरवाइज वी वोंट बी नेविगेटिंग. दैट इज अ सिंपल यूआई जो हम बनाने वाले हैं, राइट? I guess this much is clear to the audience. So someone is writing, we will be displaying the username entered on the home page. Will we display the username entered on the home page? I am actually not getting the question, but I guess we will I be think kind of he's doing saying that after we log in, like if my username is like Rishabh, after I log in, Yeah. will the home page will display my name from the database? We can definitely do that as well. There is no worries about that. We can do that. Yeah. Yes, we so can do that. Karthik, I hope I clear your point, right? Yeah, I think that was the point. Okay. So इतनी चीज़ clear हुई ना? तो let's do a simple activity. I'll actually stop sharing my screen for a minute, right? And I'll do a simple activity. I'll actually share this. I think I'll share my. I'll actually share my entire screen one sec. Okay, is my screen visible to the participants? If yes, you can just type a yes in the chat box, and then we can move on further. Yeah, it's visible. It's visible, Nirmit. It is visible. Okay. So let's do a simple activity. Let's go to our application, right? So let's do. हम सब चीज़ basic से करते तो basic से करते. Let's go to file. Let's go to new. Let's create a new Flutter project, right? Let's name our project something. Let us call it login underscore sign up underscore page, any name that you want to give, right? And let's finish the setup, right? It's actually creating a new Flutter project, right? Okay, so as I said that we're going to have 3 files, right? So one of the file is going to be a login page, right? One of the things that we're going to have is going to be a sign up page, right? And one of the things that we want is a home page that we should navigate after signing up, right? Simple, isn't it? Guys, are we done till here? Like making the 3 pages and setting up the project? Yeah, मतलब देखो, we should code along, right? Yeah. साइड बाय साइड आप भी करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर लाइक इट्स लाइक एक वीडियो स्ट्रीमिंग जैसा हो जाएगा, सेशन नहीं होएगा फिर वो. Okay. Fine. गाइस, अगर यहाँ तक हो गया तो चैट बॉक्स में यस डाल दो, so that we can start with further implementation. Okay. What was the second project? Okay. So Steve says yes. Okay, Karthik says yes. Nice, guys. Nice. Okay. Great. So let's do a simple activity. Let's delete all of this, whatever we have, and let's make our things from scratch, right? So इतना सबको पता ही है कि हमारा सबसे मेन जो फाइल रहती है वो material.dart रहती है, इसको हम import करते हैं. Then we have a void main function जिसके अंदर run app method है जो हमारा my app widget को कॉल कर रहा है. So let us create a stateless widget. To create stateless widget, type STLESS on whatever IDE you are using, whether it is VS Code, IntelliJ, whatever it is. Type this and enter this, right? Now name the stateless widget. So as I'm using my app, I'm going to name it my app, right? ठीक है, इतना तो सबको समझ आ ही गया होगा, ये तो मैं assume कर ही सकता हूँ. ठीक है,
या कुछ लोग कोड अलॉन्ग कर रहे होंगे. सबका कोड अलॉन्ग हो गया क्या? आई थिंक ये सबका कोड अलॉन्ग हो चुका है. इतना सबको समझ ही आ रहा होगा. इट्स वेरी इजी. फेयर इनफ. काफ़ी प्रिटी इजी थिंग, राइट? So let's have a material app here, right? Material app. And okay, in the material app, let's say in the home property, let us call something called as a login widget. ठीक है? Before that, guys, why do we use material app method? Just put it in the chat box. We have discussed it in the last session, right? Yeah, you can also talk about material design as well if you Yeah. people have some idea about that. See, I know I'm going a little slow. This session could be lousy. Anytime if we, bhai please तेज करा, bhai please slow करा दे. Please tell me. We'll adjust accordingly. Right? Okay. ठीक है. I think Okay. yeah. Don't think so. They remember it right now. Right. So material app is the root, root of the widget tree, and it is the starting point for the UI widget tree. So everything comes under material app. Just remember that. Okay. Exactly. Okay. Now inside the home property of material app, we are going to have a widget called as login. Now this login widget will be created in the login.dart file, which I haven't created yet. But because I'm going to create it, I'm going to import my login.dart file, right? Okay. It will turn to green color once I start using it. Fine. So let's go to our login page. Okay, let's not use the login page. I think let's start our app using the sign up page first, and through sign up page we'll go to login page also, right? So let's do this simple activity. Rather than having login here, let's have sign up. I'm sorry I'm making this change, but it's certainly important. Let's have a sign up here, and this sign up will be actually created in my signup.dart file. Okay, sorry, import, right? Signup.dart file. Yeah. Okay. So let's create our UI in the signup.dart file. तो हमारे UI का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल रहेगा. As you can see in the camera, we're gonna have an email, we're gonna have a password, and we're gonna have a button. बहुत सिंपल है यार, इसमें तो कुछ कॉम्प्लेक्स लगेगा भी नहीं. सबसे पहला काम material.dart इंपोर्ट करना. इससे बेसिक काम तो कुछ होएगा ही नहीं. सेकेंड चीज सिंपल है यार, वी हैव टू क्रिएट अ स्टेटफुल विजेट. बिकॉज हमारा साइनअप पेज डायनेमिक रहेगा, हम उसमें बटन क्लिक करेंगे तो कुछ डायनेमिक एक्टिविटी होगी. सो फॉर दैट वेरी पर्पज वी आर गोइंग टू यूज अ स्टेटफुल विजेट. नाउ आई हैव टू यूज माय गिव अ नेम टू माय स्टेटफुल विजेट. सो आई विल नेम इट साइन अप. See, it is the same widget that I will be using in the, I will be calling in the sign up page, as you can say it. ठीक है, तो उसी नाम का मैंने एक stateful widget बना रखा है. And now I will create my application, right? So what can I do? As it is actually not showing me any error. Let us say very simple thing. Let us have a scaffold here, right? Inside the scaffold, let us have an app bar, saying that let us have an app bar widget, in which let us say inside the title we are actually having a text, and inside the text let us say we can have, let's say, sign up page, right? Sign up page. Certainly simple. Let's also give a background color. Let's give it, let's say purple दे देते हैं कुछ तो, ठीक है. Other than that, let's center the title, जो भी हम title बनाएंगे. So let's center the title, right? So let's center the title. So we're using the center title property. Let's set it to true as it is a boolean set thing. Okay, इतना चीज बन गया. Let's do a simple activity. Let's just run the application and let's see, right? Let me do one simple. Okay, I think everybody is okay. So in the meanwhile the Gradle build is happening. I can actually talk to you people, right? Let the Gradle build happen in the meanwhile. No worries on that. इतना सबको क्लियर हुआ ना यार? एक सिंपल चीज, एक मेन फाइल बनाई है, ठीक है. हम मेन फाइल में कुछ नहीं करेंगे. विल जस्ट यूज मेन फाइल टू नेविगेट टू डिफरेंट पेजेस. सिंपल सी चीज है, इतना कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं. सेकंड चीज यार, हम एक लॉगिन और साइन अप पेज बना रहे हैं, तो मैं पहले साइन अप पेज के साथ काम करूं, देन आई विल वर्क विद द लॉगिन पेज इन द सिमिलर मैनर,
और फिर देन आई विल वर्क विद द होम पेज। तो पहले हम UI डिजाइन कर रहे हैं, हमारा UI वाला काम हो जाए, उसके बाद हम फायरबेस से भी इंटीग्रेट करेंगे, राइट? सिंपल चीज है। Have you guys done till here, right? Because अगर आपने यहाँ तक किया, then we will proceed further. Else we will wait for you guys, right? We'll wait for a minute or two. Yeah, Yeah, sure, Karthik. we can. Nice, Karthik. Okay, sorry, वो हो गया था। sorry. Okay, देखो हमारा सिंपल सा पेज रेडी है, देखो यही तो किया ना। Yes. एक टाइटल डाला, उसको सेंटर किया है, उसको बैकग्राउंड कलर डाला है, सिंपल है। चलो आपके साथ ही कोड अलोंग करते हैं, आप लोग भी करो कोड अलोंग, देख तो रही है। लेट्स डू दिस। तो नाउ हमने ऐप बार तो डाल दिया, लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी, लेट्स वर्क विद द बॉडी। इनसाइड द बॉडी लेट मी यूज अ सेंटर विजेट, ठीक है। इनसाइड द सेंटर विजेट लेट मी यूज अ चाइल्ड प्रॉपर्टी, और इसके इनसाइड लेट मी हैव अ कॉलम, ठीक है। Now I am sure that you will be aware that center is a single child widget and column is a multi-child widget. So we will be using something called as children, ठीक है। जो भी हमारे widgets रहेंगे वो हम इस लिस्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो let's create that. सबसे पहला चीज जो हमको चाहिए that is a text field, सिंपल। तो text field में दो चीज है, पहले तो let us decorate the text field, तो मैं उसके लिए एक डेकोरेशन नाम का प्रॉपर्टी यूज करूंगा, एंड फॉर दैट आई विल बी यूजिंग एन इनपुट डेकोरेशन नाम का विजेट, ठीक है। एंड इनसाइड दिस आई विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज अ लेबल, जहां मैं एक टेक्स्ट दूंगा उसको ईमेल करके। थोड़ा सा तेज गया हूं, मुझे मालूम है, मैं थोड़ा सा तेज गया हूं, सो बट आप इस चीज़ को देख सकते हो एंड यू कैन सी। कुछ नहीं है, एक कॉलम है इसमें चिल्ड्रन है, उस चिल्ड्रन के अंदर ऑब्वियसली यू नो वी गोना हैव मेनी फील्ड्स, लाइक वी गोना हैव अ टेक्स्ट फील्ड, देन अ टेक्स्ट फील्ड, देन अ बटन, राइट? तो आई यूज अ टेक्स्ट फील्ड, आई हैव डेकोरेटेड अ लिटिल बिट बाय एडिंग इट अ लेबल, राइट? नाउ मूविंग ऑन फर्दर, ओके, we'll have something called as an on-change property, ठीक है। अब इसमें क्या होगा that in the on-change property, let me tell you very simple thing. जब मैं कोई वैल्यू डालूंगा अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर, that value is required to be stored in a variable, isn't it? जिसको हम फर्दर यूज कर पाए। कि ईमेल है तो मैंने ईमेल एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, लेटेस्ट उसका नाम ही ईमेल है, लेटेस्ट आई हैव अ पासवर्ड, उस पासवर्ड को भी मैंने किधर स्टोर कर दिया, पासवर्ड नाम के वेरिएबल में। तो वही चीज हम कुछ वहां पे करने वाले। सो फॉर दैट वेरी पर्पस, inside this state signup and before override, let's create a variable of the type string and let me name it email, right? Simple. And inside this on changed, ठीक है। तो क्या होगा जब हम इसको चेंज करेंगे, सो वी आर गोना स्टोर आवर वैल्यू ऑन चेंज की इनसाइड, यू नो जो वैल्यू होगी उसको वैल्यू नाम के वेरिएबल में डालेंगे। वी आर गोना यूज अ सेट स्टेट मेथड, and inside the set state method we're going to set the value of email to what we're going to set to value, जो भी चीज वैल्यू में होगी उस वैल्यू को हम स्टोर कर। Okay, it is giving me an error, so let me see why it is giving me an error. Okay, it's showing me an error. Okay, we'll see it a little while, कोई टेंशन नहीं, इसको थोड़ी देर में हम देखते हैं। In the meanwhile, we can create our other text fields as well, right? So let us do a simple activity. Okay, let us move on further. In the meanwhile, हम इस पर वापस आते हैं, तो ये वेरिएबल वाला सीन है। Let's give it a little bit of padding. So inside the padding, let me grid some edge inserts. Let me say some value of 10.0. I hope you are aware about how to give padding or size boxes. In the similar manner, we are going to have a text field, right, that will store our password. So inside this, we're going to use the decoration property. We're going to use the input decoration widget. Inside this, हम एक label डालेंगे, right, in which we are going to have a text, let us say
obviously of the password, right? And yeah, now other than that, ठीक है, text field हो गए. Other than the text field, we are also required to have an elevated button. जब हम click करें तो उस पर कुछ functionality आनी चाहिए. So let me use an elevated button. ठीक है, अभी on press में मैं कुछ functionality नहीं डाल रहा हूँ. And inside the child property of the elevated button, I'm gonna have a text. So let the text be, sign up. What is this thing? Okay. Sorry. Everything looks fine over here. Okay, this thing is okay. Moving on forward, this thing is showing an error right now. So inspect annotation. Invalid constant value. The value in constant. Okay, let's see to this thing in the meanwhile. Okay, Karthik and Samir still is to just slow down and. Yeah. I'll do that. No worries about that. I will put the code in the chat box if you need. I'll do that. right? I'll do that. ये वजह बहुत basic चीज़ है, इसलिए मैं थोड़ा तेज रश कर रहा था. Otherwise I knew. See, so over here I got the email thing. I can write email, right? Over here I can add the password. Okay, let's come back to the session where we are. Yes. Really sorry if I've got a little fast. You can actually have a look at the code in the meanwhile. Yeah. Nirmit, just give them a walkthrough through the code. Yeah. I'll give that. बहुत simple code है, कुछ नहीं है इसमें. एक center है, ठीक है, body में. उसमें एक column है, ठीक है. Simple, understandable चीज़ है, column है. क्योंकि चीज़ों को मेरे को column में डालना है, right? हर चीज़ें column में रहेगी. Simple. अब मुझे email लिखने के लिए एक form type तो चाहिए ना. उसके लिए मैं text field use करूँगा. जस्ट टू डेकोरेट अ लिटिल बिट, मैंने एक विजेट यूज करा है इनपुट डेकोरेशन नाम का, ठीक है, जिसमें मैंने एक लेबल यूज करा है ईमेल नाम का. सिमिलरली मैंने पासवर्ड के लिए भी एक टेक्स्ट फील्ड बनाया है, राइट? सिंपल, इट्स अ सिंपल एप्लीकेशन, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट? इतना समझ आया? आर वी गुड टू गो? ऑल दोस पीपल हु टोल्ड मी टू स्लो डाउन, are we good to go? Steve says yes. Samir, are we good to go? I think इतना तो समझ आ ही गया होगा. I'm sorry about it. ये तो बेसिक टाइप था. तो समीर एंड कार्तिक, गाइस, ये देखो ना, आप कोड भी देख सकते हो. No worries about that. Can you know the password of user by using Firebase Authentication? No, you cannot. You cannot get to know about the password. Someone asked this, huh? Yeah. Someone asked a question. How can you know the password? No, you cannot do that. You cannot do that. आपको तो ऐप बनाना है ना, आपको पासवर्ड का क्या करना है? No, that feature is not provided to you by Firebase. Yeah. Until and unless you want to breach into the database and just take away the data. Then definitely. आपको SQL injection ये सब करना है तो we'll think about that. Okay, Karthik says yes, Steve says yes. Okay, guys, nice. Okay, simple है. अब तो कुछ है नहीं. We have the package and stuff. Yeah. Fine. So अभी क्या करना है हमें? We have to use an elevated button. ठीक है. It's actually giving an error. Let me just resolve it. Let's see what is the error. Okay, we have added required parameter on press. It's still okay. It should actually work. Let's see. Where is the not a constant expression. Okay. Just write before text, just write the label child, and then before text just put constant and then see
maybe because Okay, so you're trying to say that let me add a const here, right? yeah, const variable, and then see showing the error. Yeah, it's still showing the error. No problems on that. It's still showing an error. Okay. No worries on that. In the meanwhile, we can actually design our login page as well, right? We'll figure out the issues further. तो आपका sign up page इतना तो at least design हो ही चुका है, right? Yeah. Guys, आपका इतना साइन अप पेज डिजाइन हुआ है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस डाल दो फटाफट. है ना? Right. Karthik, okay, no, yes तो नहीं आया Q&A, but we can know guys, if you email, right? need Yes, some email. We time, can know just the put in email, the, right? yeah. If you Yeah, need you- some time, just put it in the chat box that you need some time to code this so that we can show the code. है ना? Let's not make the session lousy, guys. Come on. Yeah, फटाफट थोड़ा एक्टिव रहो guys, क्योंकि ये सिर्फ UI पे काम कर रहे हैं, डेटाबेस का काम अभी तो तो अभी अभी बाकी तो है. start भी नहीं हुआ Firebase यार. Come नहीं. on, guys. I can't be this slow with the things, right? We have to. Okay, no worries. Let's code the login page as well, right? Yeah. Oh, wait. Where am I? Okay. Let's do simple activity. अभी के लिए यहाँ पे हम लोग login करते, so that जब भी हम run करें अपने आप को तो हमारा login page call हो. And let's do a simple activity. यहाँ पे हमने similar way में हम login page को call करेंगे. So login, right? Let's go to the login page. So basic है यार, वही अपना material.dart को import करने का है, right? Going below we're gonna import the stateful widget. Let us name it login. Simple काम है, वही जो पीछे sign up में किया. I know I'm going a little fast, but आप इस चीज को catch up कर पा रहे हो, right? Other than that, we will have a scaffold, right? Okay, so just Nirmit, just zoom in the screen and yeah, so that they can see the test. I think they are coding with you, so they just without string their eyes. Okay, I'll just manage the ID settings once. Yeah. Settings. Okay, just let me go to new project settings, manage ID settings, setting repository, no. New open settings. Appearance, let me try increasing the font once. Okay, wait. Let me just go to 14. Let me just increase this 28 maybe. Just change the font size, or you can just with the mouse wheel you can zoom in. Yeah, I tried this. It actually works in VS Code. Okay. I'm actually trying to manage the settings once. Let me just have a look at it. Settings. Let me just try doing this maybe. Did it happen? No, it actually okay. Font size 36. Just control plus and see if it's No, it doesn't work over here. Let me try. Control plus. Control plus. No, it actually doesn't work. Okay. No problems on that. No worries. Okay, we're gonna create the login page, right? So Yeah. in the meanwhile, let's have an app bar. Let's have the title as usual. Let's have the text. Simple things. Let's the text is going to be of the login page, right? Login page. Let's give it a background color. We can give it a background color of, let's say, orange, right? And inside the background color, okay, we have the background color. We are also going to center the title. So what we can do is we can put a value of true in it, right? Other than that, inside the body, I'm going a little fast, I know this, but I am damn sure that you guys can actually code and see what is actually happening, right? Inside the body, in a similar manner, I'm going to have a center. Inside the center, I'm going to have a child property. Inside, I'm going to use a column. We're going to have a children, where we're going to list all the widgets as discussed in the sign up page as well. We're going to have a text field, right? We're going to have a text field. No worries about that. Let's say have a padding widget as well.
Okay, Yash is go to setting, editor, and then font, and you can change the font size. Settings, right? Then Yeah, okay, settings, editor. editor, and then fonts. Okay. Okay, font, yeah, and Yeah, yeah. then change Thank you the so fonts. much. Thank you, Yash. Thank you. Thanks a lot. नहीं ज़्यादा बड़ा हो गया Yeah, सेटिंग्स साइज 50 हो गया लेट्स डू इट टू 24 आई गेस ओके यस आई yeah. होप Now it's दिस visible, I guess. yes yes thank you Yash for the solution I wasn't aware about that thank you right now it will be totally visible okay padding Hey, लग is गया it है visible right now? yes I hope it's it should be visible. It's it should here be on visible my. it should be visible Yeah, it should be thanks. visible Okay. this text field we had a padding let's also have an elevated button right let's try to see if it is working for it. Let's have a text. So we're gonna log in, right? Okay. Yeah. So let's run the app once. So okay, through an error. Login.dart. Expected. 8. Okay, sorry, there was something that was added. No worries on that. Some things were written. Okay, you can see this, Guys, can you see the login page right? now? Now let's just change. Let's add some labels and let's just Yeah. let's go to here. Let's have the decoration. Inside the decoration, as I told, we're gonna have the input decoration, and we're gonna use a label. Let's add the label as, let's say the label is going to be email, right? So pretty simple. We're gonna have a padding inside the text field. We're gonna have a decoration. We're gonna have some input decoration in which we're gonna have a label, right? Inside the label, let's have text. Let's have some passwords, right? Yeah, let's refresh. Let's not reload the changes. So you can see, I'll type email, I can type password, right? And I can click on login button. Though I haven't added any functionality yet, but we'll definitely add some, right? Okay. Okay. Well, we have coded the login page. Let's go and try to resolve the issues that we're also facing in the login page as well. So we had these text. Okay. So elevated button and press. Okay, okay. Fonts. I'll just share the code. Just 2 minutes, guys. I'll just share the code with you as well. So we're having sign up, right? We're gonna import the sign up page, right? Yeah. Okay, let's import the sign up page as Sign. well. Login page. Let's sign. Okay, let's see this. We will see it, if it's working. Okay, so we actually created the login. We actually created the sign up. We have kind of worked with the main. So let's work with the home page as well. So in the home page, let's just import the material file as usual. Let's have everything, let's say in a stateless widget. As I'm not going to add any functionality, let me call it simply a home page widget. Yeah. And let's say inside a container, let's not have a container, let's have a scaffold. And let's give a background color to it. Let's say, let us give it teal, let's say. Give the teal color, right? Other than that, the scaffold, we give the teal color. Let's add an app bar widget. I'm gonna give the code, just 2 minutes. Let me just code the thing. I'm gonna give it to the people sitting in the right. Inside the text, let us have in the home page, right? Home page. Okay. Let's enter the title as well. Let's enter the title. Let's add. Let's give it true. Let's give it a background color.
Okay. Other than that, we have a background color. We have the nav bar. Let's go to the body. Let's have a center, and inside the center, let's have a thing called as, let's say, we can have a thing. Let's have the child property. Inside the child property, let's have a text in which we can have saying that this is the home page. This is the home page. Let me just show the people how will it look. So let me import the home page. Let me just import the home page, and we're gonna sign up. So let's use the home page widget, and let's see the thing is working properly or not. So let's reload the changes. So yes, this is actually working. You guys can see that. Right? Okay. Okay, fine. Okay, I think everybody could see it. Let me just drop the code in the chat box once. So Just wait, Nirmit. Just let us first ask if they are coding along or not. If yeah, they yeah, are yeah, facing yeah, some issue, we can resolve their issue instead of just yeah, spoon yeah. feeding them. Exactly. You're absolutely Yeah, right. Absolutely right. Let me I just do think some small changes. that would be great if you guys are coding along. Just put in the chat box if you are done. If not, then just tell us where which part of the code you want to see, and we will try to show you. Guys, we won't be spoon feeding everything, right? Guys, because after this we are gonna add the routing functionality of Flutter, how you can route between pages, and then we will add the database wala part. So Okay, once. फटाफट go तो we have 60 participants. I expect 10 to 20 participants, like इतने लोग तो करने चाहिए यार कम से कम. Yes, just put in the chat box. अगर हो गया तो yes लिखो, नहीं तो no लिखो. We will wait. हम भाग नहीं रहे कहीं. As I told before also that today's session might be a bit lengthy, but it will be worth it, right? Steve, Karthik, Yash, done. Okay, Karthik says he has done. Okay, Okay, nice, Karthik, great. that's Great. absolutely fabulous. Steve, what about you? Okay, sure. Which one are you talking about, Steve? Okay, no problem. I'll show the code. Here is the code. That's for the home page. You want the login, sign up, or the main file? Which one are you actually asking for? All. Okay. Okay. So this is the main. See, I'll explain. It's a material app, and we're just calling the home page here, right? Inside the home page, we're having a scaffold. Rishabh, if you allow me, should we share the code? It will be Yeah, easy to navigate them. Okay, I'll share the code. yeah, sure. Just one more thing. You might have. Okay, some people will complain. They will get an error. Just make an observation. The name of my app is different. You would have, given it a different name, or you could have given the, Yeah, just make the necessary changes, yeah, right? exactly. Yeah, So this is the before main dot dart. Okay, I hope the code gets copied. Okay, this one is the main dot dart, right? Let me just. This one is the main one. Other than that, here is the login page. This one is of the login page, right? Other than that, we have the sign up one as well, right? We have the sign up one as well. Control C. And it's the sign up one, right? Login, sign up, right? Yeah, I think just the code is a little stacked, but it will work. So
guys, just make the necessary changes after importing, and then if you're done till here, just let us know in 5 minutes. We'll take a break of 5 minutes, and then we'll resume further with routing and database connection. Okay, are we cool, guys? Okay. So I have all the codes. We have the main, we have the login, we have the sign up, we have the homepage as well. I know the Homepage, code is a little stacked, but I cannot do anything. That's how it came, right? We can't, you know, we can't. हम चाह के भी उसको फॉर्मेट में नहीं ला सकते. क्या ही करे. Thanks a lot. Yeah, Steve. Steve स्टीव कर लो तो आप चैट बॉक्स में डाल देना. चलो मतलब इन शॉर्ट अगर बेसिक्स ही बात करें ना. And if you guys have any issues or if you have any doubts, just ask us right now. मतलब guys फटाफट मतलब इन डाउट तो पूछो यार, इतना तो कर ही सकते हो. एग्जैक्टली मतलब इतनी चीज हो चुकी है. हमारा यूआई बन चुका है, अब कुछ नहीं करना. अब हमारा यूआई बन चुका है. वी आर डन विद द यूआई. नाउ वी आर गोना गो एंड अटैक द फायरबेस, जिसके लिए हम एक्चुअली यहाँ आए हैं. बट हाँ, हमें वापस अपने कोड में जाना पड़ेगा, कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें करनी पड़ेंगी. बट व्हेन वी विल डू दैट, वी विल बी एबल टू यू नो do the necessary changes in the right format. Okay, so let's get started with the Firebase, right? So if you guys are excited, चलो Firebase start हो रहा है, कोड भी मिल गया, आज कोड अपने कॉपी भी कर लिया, चीज़ चल भी रही है, एमुलेटर पे डिवाइस पे देख लिया, चल रही है. Just type a yes in the chat box if you're ready for the Firebase. At least I'll expect a yes from Steve and Karthik. I definitely know that. Okay, I got a yes from Steve. Okay, that's so cool. Right. Yeah, and Okay, Steve says yes. I guess he's done. ready to fire. Yeah. Okay, let's Yeah, nice fire. one, Yash. Let's load the gun. Let's fire it up. Okay, let's do this. Okay. Now I'll be very honest to you, guys. जब मैं Firebase पे हूँ ना, अपने आंखें और कान प्लीज खुले रखना, बिकॉज अगर आप कुछ भी गलती करोगे, आपका कोड ढंग से नहीं चलेगा, इवन इफ इट लुक्स लाइक उसमें कोई एरर नहीं. सो बी केयरफुल. बहुत छोटी छोटी चीज़ें होगी Firebase में, जिसका हमें ध्यान रखना है. बट अगर हमने उन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लिया ना, हमारा कोड बहुत अच्छे चलेगा और मतलब मक्खन चलेगा, मतलब टेंशन की बात ही नहीं है. राइट, आई थिंक वी आर रेडी टू फायर. लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स सी व्हाट वी हैव. राइट, चलो लेट्स गो टू आवर Firebase कंसोल. आई गेस सब अपने Firebase कंसोल पे चले गए होंगे. चले गए सब Firebase कंसोल में? हाँ, चले गए होंगे. नो वरी. लेट्स ऐड अ प्रोजेक्ट. So you'll go to console, you'll add a project. I'm going very slow. You'll go to console, you'll add a project. Think of a project name. Let us say, कुछ भी सोच लेते हैं. Let's say sign up page. Let's say sign up page. Sign and log in. Sign and log in. Right. First step of the project is give a name to the project. डन. इतना तो सब कर ही लेंगे. इवन इफ यू ओपन द Firebase, इतना सबका हो ही जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है. ओके, कम टू द सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस. नाउ यू डोंट हैव टू एनेबल दिस. डोंट एनेबल दिस राइट नाउ, एंड आई टेल यू व्हाई. बिकॉज आप अपने ऐप को ना बस अपने लिए यूज कर रहे हो, अभी आप लोगों के लिए नहीं डिप्लॉय कर रहे हो. सबको एनालिटिक्स की अभी जरूरत नहीं है. हमने डिस्कस किया था कि एनालिटिक्स एक फीचर है या एक सर्विस है जो आपको Firebase ऑफर करता है, बट अभी आपको उसकी कोई जरूरत नहीं है. तो डोंट एनेबल इट, को बंद कर दो. एंड बस अब सिंपल स्टेप है दैट वी हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट, एंड वी हैव टू जस्ट वेट फॉर सम टाइम जब तक हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होता है. राइट, Guys, please follow along. Right. Okay. ध्यान दो थोड़ा. इतना हो गया सबका. सो लेट्स कंटिन्यू. ठीक है, ओके. सो फाइनली आवर साइन एंड लॉगिन प्रोजेक्ट इज फाइनली रेडी, एंड नाउ वी कैन फायर विद द Firebase, एंड वी कैन डेफिनेटली डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज टुगेदर. नाउ ओवर हियर ऑब्जर्व दिस. बिकॉज हम लोग एंड्रॉयड के लिए यूज करेंगे. अगर आपका iOS है तो iOS के लिए कर सकते हो, वेब है तो वेब के लिए कर सकते हो, बट क्योंकि मैं एंड्रॉयड डिवाइस के लिए कर रहा हूँ, तो मैं इस एंड्रॉयड वाले आइकन पे क्लिक करूँगा.
ठीक है, नाउ इतना स्टेप कि हमने अपना प्रोजेक्ट फायरबेस पे बना दिया. नाउ अपने फायरबेस को और अपने वी हैव टू ऐड फायरबेस टू आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, राइट. तो हम ये कैसा करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द एंड्रॉयड पैकेज नेम. इतना सबको क्लियर है? हमें क्या लिखना है? एंड्रॉयड पैकेज नेम. ठीक. अब नेक्स्ट सवाल, ये एंड्रॉयड पैकेज नेम मिलेगा कहां से? तो प्लीज ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. आप कुछ नहीं करेंगे, आप जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में. ठीक है, यू विल गो टू द एंड्रॉयड फोल्डर, you will go to app, you go to Android, you will go to app, and you will see a file named as build.gradle. You will click on that, the to build.gradle. तो आप किस ग्रेडल पे क्लिक करोगे? जो एंड्रॉयड में ऐप फोल्डर के अंदर build.gradle की फाइल है, आप उस पर क्लिक करोगे, राइट. और आप नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ. You will observe something written as default config. And besides the default config, besides the application ID, you have the name. Which name are we talking about? Let's see. We're talking about the package name. So this thing that has been mentioned in the build.gradle is going to be your package name. Do a very simple activity. Just copy this. Just copy this. Go to the the console. Add this. And the next thing is that we are going to register the application. इतना स्टेप सबका हुआ? तो प्लीज जस्ट टाइप अ यस इन द चैट बॉक्स. इतना समझ आ गया भाई? कुछ नहीं किया, फायरबेस पे गए, कंसोल में लॉगिन किया, कंसोल में प्रोजेक्ट का नाम दिया, उस प्रोजेक्ट के अंदर गए, वहां पे एक एंड्रॉयड का छोटा सा सिंबल था, उसके अंदर गए. अब हमें अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को और फायरबेस को लिंक करने का है. तो उसका पहला एक्टिविटी है अपना पैकेज का नाम देना. उसके लिए हमने सिंपल एक्टिविटी क्या करी? हम लोग गए एंड्रॉयड के फोल्डर में, हम लोग गए ऐप के अंदर, हम गए build.gradle के अंदर, और हमने यहाँ पर डिफॉल्ट कॉन्फ़िग के अंदर एप्लीकेशन आईडी देखा, हमने उसको कॉपी करा और वहाँ पे पेस्ट करके आगे बढ़ गए. सिंपल एक्टिविटी, कुछ खतरनाक हमने किया ही नहीं अभी. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू हैव टू डाउनलोड दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट. And it is very important how you will actually keep this configuration file in your project. So let's do a simple activity. Let's just download the file. ठीक है, मेरी ये फाइल डाउनलोड होगी. Let me go to my downloads. ठीक है, let me just copy it. इतना तो सब करी, लेकिन डाउनलोड होगी फाइल, उसको कॉपी करेंगे. ठीक है, एंड हम क्या करेंगे? We'll go to, am I missing something? Okay, we'll do a simple activity. तो इधर नीचे करते हैं. Go to Android again, go into the app section again, right, and paste this JSON file inside the app. No, cancel. It hasn't been copied. Let me just copy it again. अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से ऑब्जर्व करना. किसी ने अगर पहले एंड्रॉयड स्टूडियो में काम किया होगा ना, तो उनका ना फाइल का नाम कुछ ऐसा आ रहा होगा, गूगल सर्विसेज 1.json या 2.json, राइट. मेरी बात ध्यान से सुनना, इसको ना 1 रखना ना 2 रखना, इसका नाम से google-services.json होना चाहिए. इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू. इसका नाम सिर्फ google-services.json ही होना चाहिए, इसका नाम कुछ और नहीं होना चाहिए. एंड दिस शुड बी क्लियर इन योर माइंड. It should be clear to your mind, right? Okay कर दो. So we have also imported the google.services file inside it. ठीक है? Now 2 स्टेप हो गए. पहला तो एप्लीकेशन आईडी डालने, एंड्रॉइड का पैकेज नेम डालने का, दूसरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करने का, और उसको अपने ऐप के अंदर अपडेट करने का. फोल्डर कौन सा है वो भी ढंग से देख लो. इट इज एक्चुअली एंड्रॉइड के अंदर, राइट, ऐप के इनसाइड google.services.json का फाइल. इतनी चीज तो अंडरस्टैंडेबल है, हमें समझ आ रही है और इजी है, राइट. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट. नाउ थोड़ा और टीडियस काम है, ये कुछ फायरबेस की SDKs है, ठीक है. तो लेट्स डू अ सिंपल एक्टिविटी.
ये कुछ Firebase के SDKs है जिनको हमें अपने फोल्डर में अपडेट करना है और बहुत केयरफुली अपडेट करना है। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, हमारे फ्लटर प्रोजेक्ट में 2 ग्रेडल फाइल्स होती है। एक प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल फाइल ग्रेडल बिल्ड होता है और एक ऐप लेवल ग्रेडल बिल्ड होता है। तो पहले हम प्रोजेक्ट वाले में चलते हैं और इन देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें अपडेट करने को बोली है वो हमारे उसमें फोल्डर में है या नहीं, मतलब हमारे फाइल में है कि नहीं है, राइट। सो वी विल यूज दिस ग्रेडल फाइल। देखो मेन अभी एंड्रॉइड वाले में मतलब दैट्स एन ऐप लेवल, हमें प्रोजेक्ट लेवल वाले पे आना है, ठीक है। इनसाइड दिस ऑब्जर्व मी केयरफुली। देखो बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर वी हैड टू हैव द गूगल वन जो मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे दिख रहा है, सी आई कैन सी दैट। बिल्ड स्क्रिप्ट के अंदर मुझे गूगल चाहिए था, वो मेरे पास है, ठीक है। नेक्स्ट देर आस्किंग मी टू अपडेट अ डिपेंडेंसी जिसका नाम है com.google.gms। क्या ये है इधर? ओके नहीं है, तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा, राइट। सो आई विल कॉपी दिस, आई विल पेस्ट दिस, ओके सिंपल। ये चीज़ भी हो चुकी है, ये वाला चीज़ भी मैंने अपडेट कर दिया है। अब हमें ऑल प्रोजेक्ट्स में डालना है और हमें चेक करना है कि गूगल है कि नहीं, ये भी है, ओके। तो हमने हमें जो चेंजेस प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड ग्रेडल में किए थे वो मैंने कर दिए। अकॉर्डिंगली आप भी करो एंड आई एम स्टैम्प श्योर कि आप उसको सक्सेसफुली कर पाओ। नेक्स्ट मूविंग ऑन फॉरवर्ड विल गो टू द ऐप लेवल बिल्ड ग्रेडल और अब हम इन डिपेंडेंसीज या फिर इन प्लगइन्स के लिए चेक करें, ठीक है। First of all, let's see whether we have the apply plugin com.android.application. Yes, it is present. Do we have this plugin com. No, we don't have it. So हमें इस चीज को भी इसमें अपडेट करना पड़ेगा, okay. Second, we have to go to the dependencies. Let me go to the dependencies, okay. We have to add this dependency जो हमारे पास नहीं है, so we'll definitely add it. तो हमने ऐड कर दिया है। सो नाउ हमने दोनों को कर लिया, ओके। यू डोंट नीड टू प्रेस ऑन सिंक नाउ। ये चीज़ कॉटलिन या फिर एंड्रॉइड में होती है, फायर मतलब फ्लटर में ऑटोमेटिकली हो जाती है। सो वी अपडेट द फॉलोइंग इनटू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो या फिर इंटेलिजे या फिर जो भी आप, अगर आप VS कोड पे काम करो उधर आपने अपडेट कर दिया होगा। मैंने भी आपको अपडेट करके दिखा दिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप एंड नथिंग, नाउ वी हैव टू जस्ट कंटिन्यू टू द कंसोल। So we have finally set up our application. Is it fine? Is it fine? ऋषभ, is it fine? We have set. तो हमारा क्या हो गया अभी तक? हमने यहाँ पे अपना UI बना दिया है, हमने हमारा Firebase को सेटअप कर लिया और अपने एप्लीकेशन के साथ लिंक कर दिया, राइट। तो 2 स्टेप्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड आई होप आपका भी कंप्लीट है। देखो इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपको कुछ नहीं हुआ है, यू कैन डेफिनेटली राइट इन द चैट बॉक्स, हम अभी के अभी इसको रिजॉल्व कर देंगे। हाँ लाइक अब भी डाउट आ रहा है तो अब भी कुछ एरर भी आ रहा है तो डाल दो, रिजॉल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे तो इट्स लाइक पीछे फिर आना पड़ेगा आपके डाउट्स को लेके, ठीक है। गाइस फटाफट जिनका हो गया है या जिनको कोई स्टेप में डाउट है या रिपीट करना है तो बोल दो फटाक से, बिकॉज इसके बाद तो सिर्फ अपने को मॉडल टाइप बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। ओके ओके, एनीबॉडी कैन जस्ट टाइप ये स्टीव तेरा हुआ कि नहीं, यस तेरा हुआ कि नहीं, कार्तिक तेरा हुआ कि नहीं, तुम लोग बताओ यार, बिकॉज़ आई कैन जस्ट सी यू गाइस टाइपिंग इन द चैट बॉक्स। या नहीं हुआ तो हम करेंगे, वापस दिखाऊंगा कोड भाई, मैं लिख के दूंगा तेरे को कोड, पर तू बता कि तेरा हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इफ यू आर कमिंग टू द सेशन इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी गेट यू नो। और कुछ इश्यूज है तो वी हैव हितेश भाई, हितांश भाई एंड वी हैव ऋषभ भाई एज वेल, दे विल डेफिनेटली एड्रेस द डाउट्स। Do we have to apply plugin in app level Gradle file? दोनों में करनी है, दोनों में, प्रोजेक्ट लेवल एज वेल एज ऐप लेवल, दोनों में करनी है, सॉरी दोनों में करनी है। उन रिस्पेक्टिव प्लगइन्स होंगे उसमें, प्लीज उस चीज को बहुत केयरफुली करो। Allow space, it doesn't allow I guess space most in of the VS Code. participants are using VS Code. I am not really aware about कि it is allowed, maybe it might not be allowed. Okay, let me look into it in the VS Code as well. and once you can check, yeah. Yeah. The big issue, it's happening, something that is happening.
Rishabh, is it actually working or not? I'm trying it out right now. If you're trying. Okay, we'll wait. No problems on that. Okay. In the meanwhile, can you display the added code? Okay, I'll definitely do that, Uchika. Just 2 minutes. See, this is the Android level, project level Gradle file, in which I've added this dependency, this one. I'll just copy this. देखो, वन इज कि आपको बिल्ड स्क्रिप्ट में गूगल दिखना चाहिए, ठीक है, इतनी चीज तो क्लियर होगी. सेकेंड है आपको ये क्लास पाथ दिखना चाहिए, दिस वन, ठीक है. आई एम नॉट श्योर अबाउट कि वर्जन सबका सेम होगा कि नहीं, बट आपको ये वाला दिखना चाहिए, राइट, दिस वन. ओके. तीसरी चीज है कि आपको ऑल प्रोजेक्ट्स में गूगल दिखना चाहिए. जनरली गूगल सब में अवेलेबल होगा. आई जस्ट थिंक दिस क्लास पाथ इज नॉट अवेलेबल, जो मैंने अपडेट करा है. सो आई जस्ट टाइप दिस थिंग इन द चैट बॉक्स, right? You can just need to add this one. Okay, understandable, easy. Ruchika, is it fine now? Ruchika, is it fine? I did just show you the, you know, the code. Okay, it's clear. Great. Now there is another Gradle file. दैट इज द ऐप लेवल. सो देखो, एंड्रॉइड है, ऐप है, उसके अंदर ग्रेडल है. उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करें? एक तो हमने ये प्लगइन डाला है 25th लाइन पे, देखो, ठीक है. सो जस्ट ऐड दिस आल्सो. डोंट मेस इट अप, डोंट मेस द प्लगइन. आई विल जस्ट डू वन सिंपल एक्टिविटी जस्ट टू इंश्योर कि प्लगइन मेस अप ना हो. तो जो मैं प्लगइन्स अब चैट बॉक्स में डालूंगा, दे आर द प्लगइन्स फॉर द ऐप लेवल, राइट, और द प्रोजेक्ट लेवल. And other than that, this one is the one. Other than that, हमने अभी कौन सा ऐड किया? And I think we also added the implementation one, right? So dependencies के अंदर एक implementation other than that हमने ऐड करी है. So आप उस चीज को भी अपडेट कर दो. इतना क्लियर है? डाउट है तो पूछ लो, बहुत टाइम है, आराम से बता देंगे, कोई टेंशन नहीं. But don't worry, the session will wrap in around just 20 to 25 minutes, बिकॉज जो मेन काम है वो हमने कर लिया. यूआई डिजाइन करना और फायरबेस को इंटीग्रेट करना, और ये जो छोटी मोटी चीजें होती है ना, ये बहुत केयरफुली करनी होती है, जो हमने केयरफुली कर ली है. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. ओके, कार्तिक, स्टीव, इफ वी आर डन वी कैन मूव ऑन फॉरवर्ड. ओके, Yash, okay, Karthik says we are done. Steve, are you done with the VS Code one? I know it's a little tough to work with the VS Code. Okay, Yash भी कह रहा हो चुका है. Okay. I guess we can do paste in the VS Code. Like we can do I that. guess, Okay. yeah. Okay. So okay, we got 2 dones and yeses. I think if Rishabh allows us, we are ready to go forward, right? चलो. Let's do it. अब चलो. Before we move on forward, we have to set something called as roots property. Okay. So that will help us navigate whenever we use the navigator command. So do a simple activity. Get back to your Android project. Right. Go back to your main.dart file. Right. Inside the home, मैं ये चाहता हूँ कि हम सबसे पहले साइन अप पेज में जाए. तो प्लीज आपने होम लिखा हो, कुछ भी लिखो, अब यहाँ पे साइन अप पेज कर दो, ठीक है. अदर देन दैट, वी आर गोइंग टू यूज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड एज रूट्स. इसमें हम अपने सारे पाथ का, अपने सारे नेविगेशन का रूट देंगे. सो वील यूज दिस, राइट. सो हमारा सबसे पहला रहेगा लॉगिन, ठीक है. जस्ट ऑब्जर्व मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक.
Okay, in this curly bracket you can write anything, but I'm using a underscore, and inside that I'm gonna use the login thing. Okay, other than that I have to also import other dependency जो मेरे main dot net पे नहीं करी है. एक तो मुझे login चाहिए, sign up चाहिए, और मेरे को login चाहिए, right? देखो, it's very simple to understand कि यार अगर मैं किसी दूसरे का widget use कर रहा हूँ, right, तो मुझे उसकी dependencies भी तो अपने फाइल में import करनी होगी, isn't it? Let me use the login one. Okay, this thing is done. Okay, you can see the routes यहाँ पे set करें, ठीक है. इसी तरीके से similarly you can add the home page one as well. So we'll use the home page. And we're gonna add the home page one. Other than that, we are also going to have the sign up one, right? Just do one thing. अगर आपने ये similar code किया है, I'm gonna paste this in the chat box and please इसको update कर देना, क्योंकि जब हम navigator use करेंगे तब हम इस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, right? I pasted the thing in the chat box as well. It's not gonna take time. We're gonna rush. थोड़े से time में rush करेंगे. बस इतना सा change कर दो, right? इतना सा change कर दो, ठीक है? Okay. Now, okay, इतना सबका हो गया ना. ये चीज route तो सबने कर दी ना अपने initialize. Okay, my internet connection is a little unstable. Rishabh, can you ensure that my voice is actually coming properly? There is no lag, is it? No. There's no lag, right? Okay, Yeah. okay. Rishabh, are we good, ready to go forward? Yes, I guess just let's have a confirmation from the participants as well, and then we are good to go. What? Okay, Why? No. guys. Okay, yeah, Karthik says yes. Okay, we get the confirmation. Okay, moving on forward. Now, अगर आपको sorry. Okay, अगर आपको Firebase use करना है ना, तो आपको दो डिपेंडेंसीज लगती है. पहली डिपेंडेंसीज का नाम दो, लेट मी जस्ट नीचे कर देता हूँ. पहली डिपेंडेंसी का नाम रहता है Firebase core, राइट? तो पहली डिपेंडेंसी ये है. आई एम गोना ऐड दिस इन द चैट बॉक्स. एंड द सेकंड डिपेंडेंसी जिसका हम ध्यान रखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी Firebase auth. दैट विल एक्चुअली बी यूज्ड टू authentication. अगर आपको यूज करना है, so you use this dependency into your files. Now guys, we need to update our pubsec.yml file, so we're going to do that. So let's do a simple activity. Let's get back to the Android Studio. Let's go to our favorite pubsec.yml file. Now in the dependencies, we have to update these two dependencies. ठीक है? तो पहले तो मैं Firebase core को update करूँगा. So I'm just gonna copy this, the latest version. I am gonna go to Android Studio. I'm gonna paste this, right? And just that, I'm gonna set it up as the Cupertino icons. Okay? Now, please ensure that you are actually doing this thing properly. यहाँ पे दो spaces रहनी चाहिए, right? अगर आपने एक space कम दे दी, एक space ज़्यादा दे दी, तो आपका pubget ढंग से नहीं हो पाएगा and it will actually show an error. तो एक आपको जो dependency import करनी है, that is Firebase core, right? Other than that, हमें Firebase auth को भी import करना है, right? So we'll just copy this and we'll do something like this. After doing this, ठीक है? After doing this, I'm just gonna do pubget, and if it shows exited with 0, right? Exited with code 0, that means मेरा pubget successful हो चुका है, right?
Now we are actually going to work. So now you need to actually come to the main folder. अच्छा, इतना हो गया सबका? इतना हो गया सबका? इतना हो गया सबका? एटलीस्ट इतनी डिपेंडेंसीज तो इंपोर्ट कर दी ना, कोर वाली और ऑथ वाली तो कर ली ना सबने? ओके, सिंपल है, इतने तो कुछ एडवांस है भी नहीं. ठीक है, लेट्स गो टू द मेन डॉट डाट फाइल. और यहाँ पे दो चेंजेस हमें करने पड़ेंगे. ठीक, पहला तो है प्लीज इंपोर्ट द कोर लाइब्रेरी. So import this file firebase core/firebase_core.dot and also import the auth file, that is firebase_auth/firebase_auth/dot. Simple. Now you need to do two things. Inside this, on line number line, you're going to write widgets. Okay, Control Z. Okay, you're gonna write widgets, right? Okay, Flutter binding dot ensure initialized. Please write this thing inside your void main. So what will this do, right? Just write it over here. तो void main के ऊपर write this. This will do a simple thing. ये आपके जो widget रहते हैं, Flutter रहते हैं, वो JSON फॉर्मेट में स्टोर रहते हैं ना, तो जो भी JSON में स्टोर रहेगी चीज उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. Just copy this and paste it here. Sorry, and just do a simple thing. Just paste it here. ठीक है. Other than that, there's one more thing that you need to add. That you're gonna write Firebase auth dot Firebase. Okay, wait. Firebase dot initialize app. ठीक. And you're going to make use of async and await for this. So async, and in front of this you're going to use await. ठीक है. So this is the second thing that I've written in my main function. So I expect you to write this. Right, I expect you to write this, and I hope आपने ये चीज लिखी है. ठीक है. ओके, ये तो सबका हो गया ना, इतना तो हो गया ना. ये समझाऊंगा कि क्या है, बट लेट्स मूव ऑन फॉरवर्ड. आई होप हो गया होगा रे, इतना तो सबका हो गया होगा. आई एम डैम श्योर, राइट? ओके, लेट्स वर्क विद आवर साइन अप पेज. Now in the sign up page, I am going to have two variables. One is going to be a string named email that will store my email, whatever will be passed into my text field, and second I'm going to have a password. तो थोड़ा तेज करते इसको कोड, right? Now inside the text field, we're going to have the Unchanged property, right? Inside the Unchanged property, whatever thing I'll write will be stored in the value variable. Then I will use a set state method जो आपको शायद पढ़ाया होगा, and inside this set state method I am going to update the value of my email जो भी value में store होगा. Simple. I'll just copy this code and paste it over here and do this similar activity for the password thing as well. So we have a little padding over here. In the similar fashion, what are we supposed to do? We are going to have the Unchanged property. We're going to have the okay, I'm really sorry. We're going to have the Unchanged property. Inside the Unchanged, whatever we write will be stored in the value, right? Now we will use a set state method, and inside the set state method we're going to do a very simple thing कि हम अपने password का value जो भी value में store होगी वो store कराएंगे.
सिंपल. वन मोर थिंग, जब भी आप अपने ओके लेट मी जस्ट रिफ्रेश द चेंजेस. तो होगा क्या एग्जैक्टली? ओके, तो जो भी मैं लिखूंगा ना, लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ भी, निर्मित, लेट्स से @ कुछ भी, wal.com, and whenever I write password, see, whatever password I am writing is actually visible to the user and which we don't want. So we want कि यार वो कुछ dotted जैसा आ जाए. So for that we will be using a property called as obscure text. And we'll set this property to true. Certainly simple, right? Now let's reload and see whether the changes are enabled or not. See, you can actually see that अब dotted आ रहा है. ठीक है? Okay. Now we're gonna work with the elevated button. So let's work with the elevated button. Let me just little bit format the code. Inside this, we'll be working with try and catch. अच्छा, इतना सबका हुआ ना, इतना सबका हुआ है, ये सबका हो गया होगा इतना, राइट? गाइस कम ऑन चैट बॉक्स में डाल दो अगर हो गया तो फटाफट यार. वी हैव 50 पार्टिसिपेंट्स और सिर्फ 2 लोग एक्टिव है. एक साथ में करो, तुम लोग भी थोड़ा फील लो. बिकॉज देखो ये प्रोजेक्ट अगर एक बार बन गया तो आगे आपको समझ जाएगा कि डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करना है. लाइक okay. निर्मित, आई गेस वी आर गुड टू गो. वो कर रहे हैं साथ में. ओके, तो विल बी समथिंग कॉल्ड एज अ ट्राई एंड कैच ब्लॉक. ठीक है, तो हम पहले ट्राई करेंगे और अगर हमारी चीज सक्सेसफुली, तो वो ट्राई में जो भी चीज है वो सक्सेसफुली चल जाएगी. अगर कभी एरर आता है तो ये जो कैच है उस एरर को पकड़ेगा एंड देन वी कैन डू वट एवर वी वांट विद द एरर. फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ जो भी एरर आएगा जब भी मैं कुछ करूंगा तो वो कुछ प्रिंट ही कर देगा. ठीक है, सर्टेनली सिंपल. In the try, you're going to do a very simple activity. Let's say we are using the final keyword and let's say I'm making a variable called as new user. अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पे क्या करूँगा. Before I use that, I'm going to do a very simple activity. Come to line number 11. यहाँ पे लिखो final. Right. Final auth equals Firebase.auth. राइट, ठीक है, इतनी चीज कर लो. सो डू दिस ओवर योर स्ट्रिंग ईमेल. इससे क्या होगा, हमने क्या किया, जो हमें बार बार ना firebase.instance लिखना पड़ेगा. जस्ट टू अवॉइड दैट हम इसको कुछ ऐसा लिख देंगे. ठीक है, सो जस्ट राइट दिस ओवर देयर. ओके, moving on forward, we're going to do a very simple thing. Now we're going to initialize it. So we're going to write auth dot. Now we're going to write create user with email and password. Right, do this simple activity. इससे क्या होगा, जब भी मैं जो भी चीज़ ईमेल में लिखूंगा या जो भी चीज़ मैं पासवर्ड में लिखूंगा और जब मैं एलिवेटेड बटन में क्लिक करूंगा, राइट, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस फंक्शन. जो वो चीज़ न्यू यूजर में डालेगा तो वी विल गेट दिस, we'll store the email and we're going to store the password. Right, now you're going to use an if block. So let's say if our new user is not equal to null, right, then we're going to do a very simple activity. We are going to navigate. So we're going to use the navigator.push, right, and we're going to navigate to home page. जस्ट टू नेविगेट टू द होम पेज, आपको यहाँ पे होम पेज वाली चीज़ को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा.
Okay, rather than using push, we're going to use push named. My bad. Yes, and we're going to use this one. Okay, and कुछ भी error आई तो वो चीज़ है. Let's hot reload the app. Okay, now guys, you are ready to see the magic. जो अभी तक नहीं हो रहा था और बहुत चीज़ें lousy हो गई. Let me just type an email. Let us say I write something. Let's say gmail.com, and let me write a password. Let's say 123456, and let me click on sign up. इतने की सबको समझ आई. Now I'll show you the magic. Okay, before that हमें एक चीज़ और करनी थी. Let's go to authentication, ठीक है? And let's go to get started. And हम क्या करेंगे यहाँ पे? We're going to native providers. Okay, get to authentication, go to native providers, और यहाँ पे अपनी email password को ना enable करके save कर. तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स आएगा कि आपने enable कर दिया, राइट? अब क्या होगा, जब भी एक न्यू यूज़र को डालूंगा ना, जैसे मैंने अभी यहाँ पर डाला है, तो वो इस एरिया में अपडेट हो जाएगा. जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है, मैंने क्लिक ऑन साइन अप, राइट? एंड लेट मी फॉर इंस्टेंस रिफ्रेश इट. ओके, जस्ट 2 minutes. आई विल जस्ट हैंडल दिस. एंड so let's do a thing simple. हम वापस को रीस्टार्ट करते हैं, राइट? Okay, there's an error on line number 48. They expected a do this. Now it should certainly work. Yes, it is working. चलो अब मैजिक देखते हैं. मैंने क्लिक ऑन साइन अप. ओके, इट्स लिटिल हार्ड कोड. Just 2 minutes guys. थोड़ा सा मेरे को लगता है एमुलेटर का थोड़ा दिक्कत हुआ है. Just give me 2 minutes guys. We'll just resolve this and we'll move on forward. Just 2 minutes guys, just 2 minutes more and we'll move on forward. Devang, the emulator has stopped working. Like it's not operating. No, should I just close them? Okay, okay, okay. अब इसे ग्रेडल बिल्ड स्टार्टिंग से करना पड़ेगा. Okay. Okay, just 2 minutes guys. There was some issue with the emulator. I'll just what is it? Pixel 4? Okay. No, leave it. I'll do that. Please send the code here. Just 2 minutes. Okay. In the meanwhile, I'll send the code. Where is it? Actually, the code is extremely large, so the पूरा code तो नहीं आया है. Okay, I'll send the main code. Is the emulator working? That is actually building the real. Just 2 minutes. I'll send the code. पूरा code नहीं आ पा रहा है, so I'll just send the main code.
This is the elevated button thing that you have to write. Yeah, but that will take a lot of time, right? That's the elevated button code. Alright. Okay, sorry for the delay, guys. It's just that there was some issue with the emulator, so we restarted the emulator. We're just waiting for the emulator to, okay, it has started. Okay, let's write the email. Let's say anything. Let's say chat@gmail.com, and let's give some password. Let's say 12345 right? Let's click on sign up. Now observe, guys, this thing navigated to the home page, and now over here, if I go to my Firebase and I'll just reload it, you can see that my thing has been updated. That means I have successfully linked my authentication. Devan, can you talk to me further? Right? Is this clear? इतना दिख रहा होगा ना कि हमने यहाँ पे we have updated it. इतना हुआ सबका. I can repeat everything. I know session became a little lousy because of the emulator error, but इतना सबको दिख रहा है कि हमने कुछ किया था, हमने email password डाला, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ and it actually navigated to the home page. Right, guys, इतना सबको समझ आया ना? I know session is becoming a little lousy, but इतनी चीज सबको समझ आई होगी, I'm damn sure. ठीक है, let's do a simple activity. Let me just create a new docs, right? And write the code there so that आप उसको access कर पाओ. ठीक है, no worries on that. Code आपको पूरा मिलेगा. Control A, Control C. Let's just paste it here. Right? Let me just okay. Let me just share it with you. You can actually go to this doc link also अगर आपको कोड कॉपी करना है, so that आप उसको लिंक कर पाओ. So you can see कि मैंने I've successfully created my sign up page. I've successfully done that. तो जो मैंने प्रॉमिस किया था कि I will introduce you to the Firebase, I will help you establish the connection between Firebase and an app. वो चीज़ हमने करी. We updated the dependencies whatever required, and we also created a sign up page जो successfully work कर रहा है और मेरे Firebase पे मेरे details को update कर रहा है. Right? If you want the code, वो आप इस document file पे जाके click करके ले सकते हो, and it is clear. Now we are gonna move forward to the next big thing. That is, we are gonna work with the login page. Right? And that is going to be the last part of our session. और उसके बाद session over है and you can definitely ask your doubts. ठीक है? So let's do a simple activity. Let's go over here. I'll make some changes to the main.dart file for instance. Let us say इस वक्त हमारा जो home page होगा, let us say it is the login page. ठीक है? So let me just restart the application. And you can say I came back to the login page, right? Now I'm going to do the similar kind of activities in my login page as well. Simple चीज़ है, वही चीज़ है. So I'm going to go to my sign up page. मैं वही 3 अपने parameters को copy कर लूँगा. Let me do it once again. I'll copy this. I will paste it here. Simple. अभी Firebase auth को error दिखा रहा है because I haven't imported the dependencies. So I'm going to import the dependencies. Dependencies कौन सी थी? Firebase auth. And the other dependency that I had to import was of the core, right? Okay. So we did this, right? Now we have the text field, right? Now one of the things that we had to do in the text field was that कि अगर कभी ऑनचेंज आया और कुछ वैल्यू स्टोर हुई तो उसको हम सेट स्टेट मेथड के थ्रू उसकी वैल्यू ईमेल से अपडेट कर देंगे. सिंपल थिंग, इसमें हमने अभी डिस्कस किया. इस टेक्स्ट मीट में भी वही करना है. वी आर गोइंग टू गो टू द ऑन चेंज मेथड, राइट. हम कुछ वैल्यू डालेंगे इसमें, राइट. वी आर गोना यूज द सेट स्टेट मेथड. इनसाइड द सेट स्टेट मेथड अब मैं पासवर्ड को अपडेट करूंगा विद द वैल्यू, राइट. अदर देन दैट आई डोंट वांट माय यूजर टू सी माय पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे ऑब्सक्योर टेक्स्ट का इस्तेमाल करूंगा एंड विल सेट द वैल्यू टू ट्रू बिकॉज ये एक बूलियन प्रॉपर्टी है. Inside the elevated button, I'm going to do a very simple activity, and this is going to be the last thing of the day. ठीक है?
Inside this, similarly, I'm going to use the try and catch block error, right? Again, I'm going to use it. In the catch, I'm going to say अगर कभी कोई error आया, चीज़ नहीं काम करी, I'm going to print that error in the console. Simple. Now it's going to be the last part of the activity. Inside the thing, I'm going to use a variable called as final. Let's say signed user. It is actually going to check कि मेरा user मेरे Firebase में है कि नहीं, right? And I'm going to use auth dot sign in with email and password. And I'm actually going to put a semicolon here. Okay. Also, I'm going to use async of it. Right? Simple activity. And over here, I'm going to do a simple activity as पिछली बार किया था. If the signed user is not equal to null, right? It's not equal to null. Please navigator dot push named. Please navigate to the root name. और हमारा root कौन सा था? It was the home page. Right? So let's build the app and let us see whether ये चीज़ ढंग से काम कर रही है कि नहीं. ठीक है? Okay, so the application was restarted. Let's do a simple activity. Let's go back to our 2 minutes. Let's get back to the where we're at. So let's see कि हमने जो चीज़ करी वो सही है कि नहीं. So if I add the email, let's say chat@gmail.com, right? And I write the password, that is 1 2 3 4 5 6, and I log in, right? I am able to go to the home page because मैंने सही पासवर्ड डाला, right? और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने एक सही पासवर्ड डाला, दैट इज वाई वो वापस उस होम पेज पे गया. व्हाट इफ मैं यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू डालूं? ठीक है, लेट्स गेट बैक. लेट अस से आई राइट समथिंग ऑन लेट्स से chats@gmail.com and I write some wrong password. Let's say anything. I'm not able to go even how many times I click, and whenever I click it will show me one thing, that is there is no user record corresponding to this, right? Let me just update the code once. तो आपको ये कोड समझ आया. Let me just copy the code. Where is the code? Okay. Here is the code. Let me copy it and let me paste the code to the document that I just shared with you, right? Yep. Yeah, so Rishabh, I think that is it for today. Is it? Let me just ask. Show the error in toast. Okay, we can do that, but for that we have to use the Flutter toast thing, right? Flutter toast. We can do that. No worries about that. We have to use the Flutter toast dependencies. I know in Android you have the dependencies. तुम डायरेक्टली वो डिपेंडेंसी यूज कर सकते हो एंड्रॉइड में, बट फ्लटर में ऐसा नहीं रहता है. सो वी हैव टू फर्स्ट इंपोर्ट दिस डिपेंडेंसी इन आवर pubsec YML फाइल. सो आप जैसा कह रहे हो हम pubsec YML फाइल में गए. ठीक है, वी हैव टू अपडेट इट. ठीक है, वेट, यस वी अपडेटेड, राइट? And wherever we are using this, let's say we're using it to the login page, right? So let's get back to the login page once. Login page, where is it? Okay, let me just pubget it. The login page is here, and inside the login page I have to use this Flutter dependency. Flutter just toast. import in the login page. Yeah, You're getting that? I know you're trying to say it. So let's get back to this thing. तो हमारा अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो वी हैव टू डिप्लॉय द फ्लटर टोस्ट, राइट? ओके, करते हैं उसको, नॉट अ इशू. वेरी सॉरी, थोड़ा सा लेट्स गो बैक. सो लेट्स कॉपी दिस टोस्ट मैसेज कि अगर चला तो भाई ये टोस्ट मैसेज को भी चला दे. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज यूजर प्रेजेंट. ठीक है, Flutter toast show possibilities. Okay, just let me update the toast over here and it will definitely work.
this. It's showing an error now. No, it is not showing an error. So let's reload it. Right? It's how to reload the functionality and see whether it is working or not. No, it should work. It should work. Yeah. मतलब ऐसा हो सकता है कि स्प्लिट सेकंड के लिए दिखे बिकॉज वो नेविगेट कर रहा है बट दिखेगा जरूर, तो वो ऑब्जर्व करना, ठीक है. तो मेरा क्या था, चैट, लेट मी, व्हाट वाज द ईमेल दैट आई यूज्ड, chat@gmail.com. या chat@gmail.com. Okay, chat@gmail.com and 1 2 3 4 5 6. Okay, it should have appeared but see actually वो ना split second के लिए आ रहा होगा, but let's say we are not navigating to the, now we're not navigating, हम यही कर रहे हैं, ठीक है. Now it should work ना, अब तो दिखेगा, है ना. Let's see. हाँ, it should work. Okay, chat@gmail.com 1 2 3 4 5 6. It's not working. You just have to see why it is not working. It's in the login page, right? Now go to the run. Flutter to suspension. Let me just try it once again, and it should work. The functionality is not working right now, but it should have worked. Let me look to it 2 minutes and we'll definitely implement it. Yeah, toast. Just 2 minutes, I will implement that. No worries about that. You want to show the error in toast? Okay, it's gonna work the same way, right? No, in Flutter you need a library. You gonna look to the code? Okay. Rishabh, can you help me with this one? Yeah, we can use a snack bar as well, right? Okay, let's try. Okay, as he said, let's try this at least. Okay, this thing is not being used. You can come here once, you can see it. Yeah. Okay, other than that, other than showing the code in the toast, anybody has some other doubt than that if they haven't understood the thing? For toast, I guess Yash would be waiting after the meeting. He has some question. So other than this, the toast part, if anyone has any other doubts, they can put it in the chat, or else we are done for the day. I hope you guys were doing along with us the coding all apart, and the code was also provided by Nirmit, so that won't be an issue. So guys, how was the session? Just put it in the chat box if you are done with the application development, right? Exactly. Just 2 minutes, guys. I'll definitely resolve the snack bar issue right now. We'll definitely try to look into that. Yeah. Guys, those who are there in the meet, just put it in the chat box if you're done with the development. Steve and the other one, I hope his name was Karthik. Yeah.
Karthik, have you done with the routing wala part and then authentication with the database? या कुछ ज़्यादा ही फास्ट गया सेशन या कुछ ज़्यादा ही स्लो गया like Okay. hmm. Yeah. Guys, if you are done, like हमारी एंड से इतना ही था. Firebase था और फिर authentication था. So this is a part the Yash asked. Nirmit is coding right now the toast wala part. So What is this? Where are you writing it? let's see. कहाँ पर आना है तो बता दो. Sure. Oh, okay. Sure. Just do me a favor. It's fine. Why? Did I just zap you? Replace all the option again? Yeah. Stop it. Hold on. The camera is on. Obviously, the people can see you. And I didn't want to be seen. Yeah. No, got stuck at the copy.json file and then went floating behind. Could you see the session recording later? That would be okay. Yeah, Steve, for sure we will